Practical number 5. Today we are going to learn how to scale, rotate and position object in Cura environment. Subject is additive manufacturing and we are learning how to improve skills in 3D printing or additive manufacturing. Okay, so this is the environment on which we need to work. We are already having Cura with us. We'll position it in particular way. अब हमें कंपोनेंट को कॉल करना है. गो फॉर फाइल, ओपन फाइल और जहाँ भी आपका ऑब्जेक्ट पड़ा है वहाँ से उसे कॉल करिए. सो दिस इज़ गोइंग टू बी आवर ऑब्जेक्ट. अब हमारा टास्क क्या है? वी नीड टू पोजीशन, स्केल एंड रोटेट द ऑब्जेक्ट. सबसे पहला डेजिग्नेशन जो हमने आइडेंटिफाई किया है, विल बी कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दैट स्केलिंग, देन विल गो फॉर रोटेट एंड देन विल गो फॉर पोजीशन. सो हाउ टू स्केल दिस कंपोनेंट? बहुत ही सिंपल सा फंडामेंटल है. इसे क्लिक करिए. द सेकेंड feature available at the left hand is scale. You will be able to scale your object in percentage as well. The dimension is going to be available. We have already been working on the 100 mm by 100 mm by 100 mm cube. तो आपको x में स्केल करना है, y में करना है, z में करना है, वो आप इंडिकेट कर सकते हो. I'll go on scaling it in x. I'll say 50%. So all three are going to be adjusted and at 50%, and object is also having small dimension now 50%. ये था uniform scaling. I have already selected uniform scaling. I'll scale it again at 100, so we'll be able to see it 100. Now I'll choose the second option, snap scaling. तो snap scaling में क्या होगा? You'll be able to see it now. I am saying x should be having 50% dimension and y and z should be having same dimension. तो यहाँ पे हमें x का डायमेंशन 50% मिल जाएगा और y z 100% रहेंगे. क्यों? क्योंकि हम स्नैप स्केलिंग में जा रहे हैं. If I'll go on saying that in z I need to have 50% scaling, then I'll have z 50%. So now x and z are 50%, y is 100%. Okay, now I'll go for again uniform scaling. I'll go for 50. So snap scaling is on. I should switch it off. I'll go for 50 now. So it is not going to change. Why? Because all three are different. So if it changes, then all dimensions are also going to change. So now I'll go on having 100% dimension in all the directions. Now go on having a uniform scaling. Select the object, adjust it to 50%. I hope you are able to understand the scaling criteria. What is going to be the second criteria? As we have seen, the second criteria is to rotate the object. तो ऑब्जेक्ट को रोटेट कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल सा फंडामेंटल होता है ऑब्जेक्ट रोटेशन के लिए. Select the object, go on the third portion which is rotate. उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको reset मिल जाएगा and you will be finding 3 rings. इन rings का काम क्या है? आपको orientations provide करना. मैं कोई भी ring को hold करके पकड़ के अगर move करता हूँ तो it is going to give me the rotation. Okay, तो ये रहेगा rotation in one direction. वैसे ही अगर मैं object पे क्लिक करके फिर दूसरे रिंग में एंगल ओरिएंट करवाता हूँ तो आई विल बी हैविंग अनदर रोटेशन. अगर मैं तीसरा रिंग होल्ड करके रोटेट करता हूँ आई विल बी हैविंग अनदर रोटेशंस. सो व्हाई वी नीड दिस काइंड ऑफ रोटेशंस? टू ओरिएंट आवर ऑब्जेक्ट इन पर्टिकुलर फॉर्मेट वी नीड दिस रोटेशन स्कीमेटिक. बट इन जनरल केस इफ आई विल से ले फ्लैट, देन इट इज़ गोइंग टू बी अवेलेबल इन अ फ्लैट कंडीशन ऑन दिस सरफेस. रोटेट करते हैं तो उसके जो पोजीशंस हैं वो वेरी होते रहेंगे एंड इट विल ऑलवेज बी अबव द रेफरेंस सरफेस.
ठीक है, वो रेफरेंस सरफेस के ऊपर रहेगा, ले फ्लैट कर देंगे तो वो फ्लैट कंडीशन में माउंट हो जाएगा। दिस इज द सेकेंड फीचर विच इज़ रोटेट द ऑब्जेक्ट। नाउ हाउ टू पोजीशन, तो सबसे पहले कंपोनेंट पे चले जाइए, मूव। इफ आई विल से इन x I need to have this component at 0, press tab. In y I need to have it at 0 and z 0, then it is be oriented at the center. अगर मैं x में बोलता हूँ I need to have it at 50, तो वो x में 50 mm ओरिएंट हो जाएगा। इफ़ आई से I need to have it at 80, तो वो 80 में ओरिएंट हो जाएगा। वैसे ही अगर मैं y में बोल दूँ कि I need to have it at 80, तो वो यहाँ पे it is going out of the condition, so I'll be mentioning 50। अगर वो सरफेस के रीजन से बाहर निकल जाता है तो उसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। 60 पे पोजीशन करते हैं। Instead it should lay flat on the surface, but if you need some support to be created, then you can go on placing that support criteria and move your object for 0.1. So if it is not placed on the surface, then it will take 0. You have to mention base or support. You should switch on the support to have that reference open, Z open. Okay, so now I'll go for 0. I'll go for 0. When this thing is required, if you are having multiple components, like I'm opening again another cube, so ये cube है, दूसरा component मैं इसे scale कर देता हूँ 50% में। Now it should be oriented inside our zone. अच्छा, it is on. I'll go on having the even scaling for 50%. Now select the move and try to move your component inside the region. इसे आप कर दीजिए 0. It is not possible to place it at 0. Just place 50. In Z you should go for 0 and in Y you should go for 50. So now it is there. दोनों को सीरीज में रखना है तो भी रख सकते हैं। There is no interconnection between them. अगर एक दूसरे के पास में रखना है तो you should be mentioning Y as 60, you should mention X as 0, तो ये दोनों सीरीज में आ गए। I hope you will be able to understand this one. Now if I'll go for Y0 and X60, तो ऐसे ओरिएंट हो सकता है। तो you can position different components to have multiple placements. Now what is going to happen to the time duration? ये दो कंपोनेंट के लिए हम लोग पहले दिखा देते हैं, फिर एक कंपोनेंट को रिमूव करके दिखा दूंगा आपको टाइम ड्यूरेशन में क्या डिफरेंस आता है। So is it good to place multiple components? It depends on which kind of components you want to manufacture. So this components having the cubes, having two cubes having size 50 by 50 by 50 is going to take time of about 4 hours and 13 minutes. Okay, if I remove one, then what is going to happen? The cube is having size 50 mm by 50 mm by 50 mm, and this component is going to take time about 2 hours and 3 minutes. Look, one is going for 2 hours 3 minutes, two is going for 4 hours 6 minutes. This is the criteria. So multiple components, when they are placed, individual component, whatever time it takes is going to be there. So how you are going to save your time? You are going to save your time depending on the component sizes, okay, and the time for placement, the table clearance, and time for highlighting the code every time. So you can save that much of time only. बाकी प्रोडक्शन का टाइम तो if one component is there, it is taking 2 hours, 2 component place करेंगे 4 hours लेंगे, 3 component place करेंगे 6 hours. So it is going to be multiplied. Thank you very much for watching. Subscribe the channel for more information and like and share